Let's see the difference between the C and C++. And today's class we are going to see what the features of C++. Okay, features. What are the features? Features means the language developer provided the features, okay, or facility to the developer. Okay, means language developer who is providing the facility. Language developer जिन्होंने वो लैंग्वेज बनाई है, ओके, जिन्होंने वो लैंग्वेज बनाई है वो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं किसको? डेवलपर को. That's providing the features what? Developers. Facility. That's providing the facility to the developers. That is known as features. Okay. So what are the features? That is the same features are available in C and that is the same features are available in C++. Additional features is what? Inheritance, polymorphism, properties of oops. Okay. Oops properties are there. Okay. Save as this one. Properties of oops. Sorry. Property features of C++. Okay, these are the features of C++. Something the same features are available in C also. Okay, it's a simple, easy to write. A second. Okay, so what are the features we have seen in the C? That are the same features are available in C++. And additional features is what? This is the additional features. It's what? Object oriented. Okay, it's a simple, easy to write. Okay, libraries are available. Portable, we can carry from one machine to another machine. Excuse me. It's a mid level, it's a high level as well as low level. It is used to develop the low level application, means operating system or interacting with the hardwares. Okay, in CRT, CT scan, that is hardware, interact with the hardware, as well as you are going to create high level application. So high level application, that snake game or supermarket I have shown to you, that is high level application. Structured hai, okay, we have the structured programming language. So there is a one structure for the program classes, then we are going to create main functions. Okay, then we can create objects, so we can call to the class of the by creating the objects. Okay, we have the one proper structure of that. Okay, structured means it's not a structure. Okay, it's a structured कि एक प्रॉपर सिंटैक्स अवेलेबल है उस प्रोग्रामिंग का. ओके, पाइथन में स्ट्रक्चर नहीं है, directly you can write the program. Okay, so rich library, huge library is there. Object oriented concept is added, classes, object polymorphism, inheritance. Recursion is there. C is also having the recursion. Memory management. Okay, so pointer is there, that means the memory management is there. Okay, so pointer is related to the memory management. Whenever we declare the any variable, okay, in a programming, so memory will be allocated to the A. So now if you want to find the address of A, okay, if you want to find the address of A, which variable is which symbol is used? Ampersand. Okay, if you find your address of A, you will get the address of A. Okay, so if you want to store the address of A in another variable, okay, if you want to store the address of A in the another variable, that is known as pointer. Okay, that is known as what? Pointer. ओके, अगर ये वेरिएबल का एड्रेस अगर आपको दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है, दैट इज नोन एज पॉइंटर. सो पॉइंटर इज द व्हाट? Variable which hold the address of another variable. Okay, ampersand of A, that's it. Pointer is the variable which hold the address of another variable. Then how we can denote the pointer? Integer pointer. Okay, asterisk p, that's it.
P is a pointer variable. We need to create a pointer variable first. Okay. So that is deal with what? Memory addresses. If you want to deal with the memory addresses, you are not accessing directly this value. You are going through for addresses. I want to add address. Okay, plus 2. So it will be come to the next location, memory addresses. So for that purpose, for memory address manipulations, we are going to use the pointer concept. Okay. So the pointers is also available. Then extensible. C++ is also extensible. Okay, we can add a new feature to the C++. It's a faster and it's a compile base. Okay, C++, and Java, that are the compiler based programming language. Okay, C++, okay, Java is a compiled and interpreter based programming language. C++ are the compiled based programming language. जब आप रन करने के लिए भी जाते हो तो भी सबसे पहले कंपाइल ही होता है. ओके, जावा इज अ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, पहले कंपाइल करना पड़ता है, कंपलसरी है. उसके बाद सेपरेट स्टेप लिखना पड़ता है जावा में कंपाइलेशन की, और सेपरेट स्टेप लिखनी पड़ती है एग्जीक्यूशन की. ओके, दो कमांड लिखना पड़ता है हमको जावा में, वन फॉर कंपाइलेशन एंड सेकंड फॉर इंटरप्रेटर. और C++ में हम डायरेक्टली एट ए टाइम सभी हो जाता है, कंपाइल भी होता है, इंटरप्रेट भी होता है. ओके, दैट इज अ डिफरेंस. So whenever we are going to learn this high level programming language like Java or Python, so we'll understand these concepts. Okay, so Java is most popular and more secured also. All these banking applications are developed in the Java with the Linux based operating system, Linux based server. Okay, Linux based server. So these are the features of C++. Same features are available as a C. Okay, only one difference, only one this we added here, what? Object oriented. Okay, object oriented concept is added. So I am going to write here something about its features. Features of C++. Features means just facility which provided who? Language developer to programmer, application developer. Okay, programmer को जो facility provide करते हैं कौन? Language developer. Who is a language developer? Business startup. Okay, that is what features. So these are the features. So C++ is OOP, we know. So it provides a lot of features. अब हम ये 40-50 साल पुरानी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे वो लेटेस्ट थी. ठीक है, सी के बाद, राइट. सी के बाद ये C++ लेटेस्ट थी, उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं. बट आज के ज़माने में बहुत सारे लैंग्वेजेस लेटेस्ट में है. सो दैट प्रोवाइड्स दैट आर गिवन, और C++ से ज़्यादा फीचर्स वो प्रोवाइड करते हैं. But C and C++ are the best programming language to develop the any other programming language. It provides a lot of features that are given below. First one is it's a simple. Second one is it's a portable, that is known as machine independent. Or you can say the portable. Mid-level, mid-level programming language. Okay, mid-level programming language. Structured programming language is has a structure. Okay, structured programming language. Then
Rich library is there. Lot of libraries are available. Then next one, memory management is there. Like a C, free function. In the C for memory, uh, for memory allocation, we are going to use calloc or malloc. We can allocate the memory. Excuse me. And to delete the memory, we have the free functions. Okay, in C programming. So memory management, you can delete or allocate the memory at the runtime. Fast speed is there. Okay, fraction of second you will get the output. Pointers concepts are here. Okay, for the memory, to deal with the memory address, to deal with the memory locations address. Okay, then recursion. Okay, recursion is there. Recursion means function calling itself only, खुद को ही कॉल करता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, बार बार खुद को कॉल करना उसको बोलते हैं रिकर्शंस, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. ओके, एक्सटेंसिबल, then object oriented, that is the additional features. Okay, then see additional features, object oriented. It's a compiled time, it's a compiler base. Okay, it's a compiler base. Extensible and compiler base. Okay, C++ is extensible, that's why Java is completed, Java is designed, databases are designed in C++. Okay, let us see what is simple, some small single line we are going to write about this one. Okay, that is for notes. Okay, why is it simple? Because you have the, it is provide a structure approach and programs are divided into the small parts. Our programs are divided into the objects and classes. Okay, so C++ is a language in the sense that it provides structured structured approach. Structure approach means the to break the problem into the part, to break the problems into the parts. And it has the rich library also, rich set of library, easy to write them. Okay, mathematics functions, other functions. So data types are there, etc. So that's why you can say it's a simple. Okay, to break the problem into the parts. Okay, you can say classes and objects is there, structured. Next one is what, machine independent or portable. So when you code, when you once you code for the one code for one machine, so that is what portable, you can use the same code with a different machine. Okay, so that is known as machine independent or portable. Okay, so the same features we are going to write here, the same features of C, I'm going to write here, whatever the same the features in C, that is the same thing. Okay, we know what is a dependent. Assembly language is dependent. Okay, assembly language is machine dependent. So whatever you are doing the code in assembly language for the machine, or entering your code for the
microcontroller, any hardware. Okay, so that is a different. Okay, you must have to write a different code in assembly language. So but in C++ we are going in this code. So that is what portable, we can same code you can use for the different machine also. So assembly unlike assembly language, C++ programs can be executed in many machines with just we need to do some little changes. Okay, with just a little bit or no change also, sometimes no need to change. Okay, but it is not what platform independent. Okay, but it is not a platform independent. Okay, platform dependent and platform independent, that is very important. So C++ are the platform dependent. Okay, they are depending on this operating system. Java, Python, okay, they are platform independent, so that's why they are popular now. Okay, platform dependent and platform independent. Okay, so you have the operating system Windows, and you are developing the one application in C and C++ for your client, and you don't know what is the operating system available to the client, and client is using the Unix operating system or Linux operating system. Okay, so the your application is not able to work on this client Unix operating system. Why? Because C and C++ are the platform dependent programming language, that's why. Okay, platform means operating system. So what to do here, we need to select the language which is has a platform independent, for example Java, Python, etc. Okay, PHP also. So these are what platform independence programming language. So then you can, if you have the any operating system, you are developing this application, and the client have the any other operating system, there is a no issue, net no no, no issue at all. Okay, no problem at all, because you are using the independent platform independent programming language. For example Java, you are using the Java, then no problem. Whether you are using the Windows, or you are developing application in Windows, or you are developing application Unix, that is no issue. Okay, or whether you are using in the Mac operating system, no issue. And client के पास कुछ भी operating system रहे, no problem, because it's a platform independent. So C and C++ are the platform dependent programming language. Okay, but it is a machine independent programming language, or portable. Okay, C and C++ are the machine dependent, independent, sorry, machine independent, but platform dependent. So once we create a code for the machine, so we can do a little change or no change for the other hardware, that is some other hardware. Okay, that is what we can carry the code from one hardware to the another hardwares. Okay, hardware's machine, so that is known as machine independent. Now mid-level programming language. So C++ is used to create a low-level application as well as high-level applications. Okay, that is known as mid-level programming language. So low-level as well as high-level. So like a C is also same. So C++ is also what used to create a low-level application. Used to do, okay, used to do low-level, used to do low-level programming, means hardware to the hardware. Okay, it is
low level application फिर what? That is develop the operating system. Okay, that is used to develop the what? Core part of operating system, that is known as what? Kernels. Okay, or it is used to create what? Drivers, networking drivers, utility, okay, printers drivers, like this way. That is interactive with the machine hardwares. Okay, so it is used to, okay, it is used to develop, okay, it is used to develop system application. Is it used to develop what? System applications. Okay, system application, not normal applications. Okay, system application and user application both are different. Okay, सिस्टम एप्लीकेशंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है, ओके, दैट इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम एप्लीकेशंस आर देयर, कैलकुलेटर वैल्कुलेटर ऐसे टाइप के आते हैं ना क्या? ओके, एंड यूज़र एप्लीकेशन जो यूज़र के लिए बनाते हैं, कस्टम एप्लीकेशंस. ओके, सो इट इज़ यूज टू डेवलप द सिस्टम एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हार्डवेयर के लिए, सिस्टम के लिए. ड्राइवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स के ड्राइवर्स, है ना, स्कैनर्स के ड्राइवर, दैट इज नो सिस्टम एप्लीकेशन. तो सी प्लस दैट इज मीन्स लो लेवल प्रोग्राम, दैट इज यूज टू डेवलप द सिस्टम एप्लीकेशंस. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम such as kernel comma driver etc, such as kernel comma x driver. Kernel means core part of operating system. Okay, kernel means होता है core part of operating system. ओ यस, ओके, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट रहता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत कुछ डिटेल नॉलेज दिया है. ओके, सो वी कैन यूज देयर गैल्विन, इट्स द ऑथर, सेवंथ एडिशन इज द बेस्ट फॉर दिस. ओके, गैल्विन इज द अदर operating system, so very good book for the operating system. So ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन किए हैं, सो पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है. ओके, अल्बर सिल्वर चार्ट एंड गैल्विन. So operating system plus database and data structure. ओके, सो ये ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखने का, डेटाबेस का ज़्यादा रखने का, डेटा स्ट्रक्चर का भी थोड़ा रखने का. ओके, सो इट्स अ 7 8 एडिशंस दिस बुक, operating system concepts. Okay, it's the 8th edition, you can use the 7th edition. Okay, silver chat galvin, these are the authors for them, operating system. So have written some important concept about the operating system. Okay, so that is the one other subject. Okay, so you'll get there, the kernel is a core part of operating system, so driver etc we are going to use, okay, to develop. So that's why it's a mid-level programming language. And why it is a high level? High level means it is used to develop the user applications, standard applications. High level features is available. Okay, that is why C++ is known as middle level programming language. It is, so high level means जैसे अभी सुपरमार्केट का प्रोग्राम देखा या स्नेक गेम देखा, लाइक दिस वे इट इज सपोर्ट्स. सुपरमार्केट है, डेटाबेस चाहिए हमको, तो एडवांस होते गए, जावा आ गया, देन डेटाबेस आ गया, कनेक्ट हो गया, तो अभी प्रॉपर डेटाबेस हो जाता है. इसलिए सी प्लस प्लस हाई लेवल के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते. इट इज़ इट इज सपोर्ट्स द फीचर्स. ओके, इट सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ क्या है, दैट इज क्रिएटिंग द यूजर एप्लीकेशंस. दैट्स वाई
That is why we can say it is known as what? It is known as mid-level programming language. That's why it is known as what? Mid-level language. Okay, that's why it is known as what? Mid-level programming language. Okay, that is the same thing you have seen in the C features. Okay, all these features are same. It's a just a extension part of C++. Oops concepts are added. Okay, just a oops concept are added there. Structured programming language has a proper structure. Header file, main, block, okay, variable declaration, function declaration. So it's having the structure so that we can divide the program into the parts. Okay, we can also use the functions, we can use also the classes, and we can modify it. Okay, C++ is a structured in the sense that we can break the program into the parts. Okay, we can break the program into the parts using the function. Okay, so it is it is easy to understand. So it is easy to understand and modify it. Okay, we can do the modify. Also, they are going to divide it into the classes. Okay, we are going to use the classes and objects there. You can see the programming, so you can understand this one. Next one, it has a rich library. Structure programming languages in that we can break the program into the part, and yes. Rich library. So C++ provide a rich library, means built-in functions are there, inbuilt. Okay, inbuilt, more inbuilt functions are there than C. C से ज़्यादा inbuilt functions available है. So I think we have not learned the functions in the C. Today we are going to start, I think, functions. Okay, once you learn the functions, you can also see how the programs are divided into the functions. Okay, so the string we have seen, so predefined functions are there in C. Like that, we have a lot of functions are available in C++. Built-in functions are available. That means you can say it's a rich libraries than C. Okay, we are just comparing the C language with the C++. Okay, and nowadays we have a lot of language. For example, you know, Python. Python, how many libraries is supported? How many libraries supported? Do you know? 1 lakh, more than. Okay, 1,20,000 libraries are supported. Okay, 1,20,000 more than, that is libraries are supported with the Python. For example, NumPy, Pandas, Matplot, okay, etc. etc. Lots of their libraries. So for after the C, this is the most valuable language, C++. Okay, that's why we are comparing the C++ with only C, not आज के ज़माने के जो लैंग्वेज है उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं C++ को. ओके, so C that's why we can say it's having a rich library. We are talking about C after the C. Okay, so the C++ that provides a lot of inbuilt functions that makes the development fast.
that makes the development fast. Okay, then memory management. Okay, free function is used to memory to delete the memory. For memory allocation, we have the calloc and malloc function. Okay, so we can allocate the memory using the free function here in the C++. Okay, it supports the features of dynamic memory allocations. It supports dynamic memory allocation. Okay, dynamic memory allocations कर सकते हैं हम C में. So you can free the allocated memory using memory at a type. Okay, by calling the free function, you can free the memory. So we can in C++, we can call the free function to deallocate. Okay, so we can free कर सकते हैं हम जो memory allocate की है. And memory कैसे manage करेंगे वो भी हम C++ में देखेंगे programming में. Okay, you can use a pointer and you can create, the for memory allocation, the new keyword is used. Okay, new, this new keywords is used for memory allocations. Okay, that is we are going to see in the programming, don't worry. And the free function is used to free the allocated memory. जैसे एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, so memory will allocated to the A, so I want to delete that one. Okay, I want to free that memory, so we can call by using the free functions. Okay, the memory will be free. Or you can create anything else. Okay, any variable, any pointer, so you can free that memory. So it is dynamic memory allocations are there, and we can free the memory by using the free functions. So we can free the allocated memory. Okay, memory runtime कैसे allocate किया हमने C में by using the calloc and malloc. Okay, memory allocation, malloc function हमने use किया था structure में. Okay, pointer structures. We can free the allocated memory at the at any time by calling which function? Free functions. जैसे आपको 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, सो आपको एरे डिक्लेयर करना पड़ रहा है. स्ट्रक्चर लेना है तो एरे आप स्ट्रक्चर लेंगे. अभी हमको एरे आप स्ट्रक्चर नहीं लेना है, और जब यूज़र डालेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट यू वांट टू एंटर, सो उतने स्ट्रक्चर मेमोरी क्रिएट होनी चाहिए ऑटोमेटिक. जितना आप एंटर कर रहे हो वैसा क्रिएट होना चाहिए. सो दैट पर्पज वी आर गोइंग टू यूज द कैलॉक फंक्शन, sorry malloc, or we can use the malloc function for memory allocation. Okay, so if you want to free that memory, so you can use the free function, right? In the C we are using the structure like this way. Then fast speed.
It's allocated the memory at any time. Okay, fast speed. Compilation process is fast. Within a fraction of second, it will be compiled and interpreted. Will it get the output? The compilation and execution time of C++. The compilation and execution time of C++ language is a fast. Now the pointers are available. Okay, we can use the pointers to deal with the memory addresses. Okay, memory addresses के साथ manipulations करना है, operations perform करना है. So we can use the pointers. So C++ provides the features. Okay, that provides the features of pointers. Okay, what is a pointer? Pointer is just a variable which hold the address of another variable. Pointers क्या स्टोर करता है? एड्रेस किसका? वेरिएबल का. पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है. डिनोट कैसे करते हैं? एस्ट्रिक से. एस्ट्रिक वेरिएबल नेम. ठीक है, दैट्स जस्ट टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. सो वी कैन डायरेक्टली, आप डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस के साथ वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो. ओके, बाय यूजिंग द पॉइंटर. है क्या नहीं? इंटीजर ए लिखते हो आप, ए इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, कॉमा बी इज इक्वल टू 20 लिखते हैं. ओके, देन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं हम. ओके, so C will store the 30. In there any addresses you are printing here? No, we are not allocating. Okay, we are not using the address. Okay, just A is created, address of A is 1000, B is uh, declare here the address of B is 2000, and C when you declare the address of C is something 3000. Okay, those are the memory addresses. So we are not going to deal with the memory addresses here in this code. Okay, just we are adding the value, we are not adding the addresses. Okay, so when you are writing here A is equal to 10 and B is equal to 20 and C is equal to A plus B, it means that it is adding what? Only values. Okay, A के address पे 1000 is the address of A के address पे which value is there? 10 value is there. B के address पे which value is there? 20 is there. Okay, what is the address of C? 3000. Okay, so the 30 is going to be stored in 3000 address. Okay, so these addresses are always fixed. Okay, these addresses are always fixed. Once you declare the variable, so memory will be allocated. Okay, memory address. Okay, memory will be allocated, so that memory having a address, this is known as memory address. So this memory address are always fixed. Okay, the value may be the changes. Okay, the value may be the changes or not. Okay, now we, okay, when we write a plus b, this address are not going to be add. Okay, only the value of that address is going to be add. Okay, now I want to deal with the addresses. Okay, so I want to reprint here address of A, so we'll get what? 1000. Okay, so now I want to deal with the pointers. Okay, let us create one pointer, asterisk p, or you can take the any number, ptr, you get any name of pointer. Okay, it's a pointer variable. Okay, what is use of pointer variable? It is hold the address of another variable. Okay, it is hold the address of another variable. दूसरे वेरिएबल का ये एड्रेस स्टोर करता है. नाउ ओके, एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर कैसे डिनोट करते हैं? एस्ट्रिक, और कौन सा टाइप है इसका? इंटीजर. सो जिस वेरिएबल का ये एड्रेस स्टोर करने वाला है उसका भी टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ए. ओके, सो हाउ वी कैन राइट हियर पीटीआर is equal to ampersand of what? A. Okay, what we are written here? ptr is equal to ampersand of A. That means ptr is a pointer variable which stores or holds the address of, store or hold the address of a variable or not. Okay,
a variable. So it is store the address of a variable. Now if you want to print here asterisk of ptr, what is going to be print here? So value of a will be print or not? Okay, what is the value of a? 30 asterisk ptr. Okay, no. Okay, if you print a ptr, then you will get the address of a. Okay, if you print a asterisk ptr, you will get the value of a. हाँ, asterisk ptr हम लिखेंगे। ओके, सो इसका मीनिंग क्या होता है? ptr का मीनिंग asterisk को ऐसे रख देंगे। ptr का मीनिंग क्या होता है? एड्रेस। ओके, ptr का मीनिंग होता है एम्परसेंड ए। ठीक है, और आगे जाएंगे हम। सो asterisk एड्रेस ऑफ ए क्या है? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए? something address is there. Okay, or you can say simply we can say asterisk and ampersand get cancel. ठीक है? Okay, asterisk and ampersand get cancel, only a will be there. So asterisk ptr means nothing but the value of a. Okay, asterisk ptr means value of a. Address of a पे क्या है? 30 है बस। Okay, so 30 will be the value of asterisk ptr. But what is the value of ptr? Ptr will store the address of a. What is the address of a? 1000. So it will give the 1000. ptr give the value address of this one. Okay, समझ में आ गया अभी ये pointers? Okay, so there are some concepts are there. बस यही है basic. This is the basic of pointers. So हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? We are not dealing with, we are not going to print the value of a. Okay, means हम वेरिएबल के साथ वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इधर देखिए, आप प्रिंट ए भी लिख सकते हो आप, मतलब प्रिंट परसेंट ऑफ ए। ओके, इट्स नॉट सिक्योर्ड। ओके, मतलब पता चल रहा है कि ए इज होल्डिंग सम डेटा, इट्स ए इज होल्डिंग द अकाउंट नंबर, ए इज होल्डिंग द पासवर्ड। ओके, दैट इज नॉट सिक्योर्ड। मतलब वैसे अब सिक्योरिटी पर्पस तो कुछ है नहीं सी में, बट वी कैन से कि मेमोरी एड्रेस के साथ हम प्रिंट कर रही है, ना कि वैल्यू के साथ। जब आप ऐसे लिखते हो एस्ट्रिक पीटीआर, सो ये ऐसा जाता है कि उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, मतलब वी आर डीलिंग विद द मेमोरी एड्रेसेस, वी आर नॉट डीलिंग विद द डायरेक्टली वैल्यूज। So that is more, something is sacred something. Okay, so that is, we are just dealing with the memory address, matlab asterisk ptr. So that is means why it's the address of something, and there is that value. Okay, we are calling from the address. Okay, or we are going to use your pointer variable. Okay, a ptr this one, and s1 dot name. Okay, we are accessing this one simply. Okay, we are accessing using this pointer variable. Okay, this is what pointer variable है ना, ऐसे हम एक्सेस किए हैं। तो इसका मतलब हम कैसे एक्सेस किए उसको? मेमोरी के साथ एक्सेस किया, मेमोरी से, नॉट डायरेक्टली वैल्यू। और यू कैन यूज सिंपली व्हाट, डॉट ऑपरेटर इज देयर, यस वन डॉट नेम सिंपली, है ना। सो वी डील विद द मेमोरी एड्रेसेस। तो मेमोरी एड्रेसेस को, वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते, दैट इज अ पॉइंटर कॉन्सेप्ट। सो पॉइंटर मीन्स ओनली मेमोरी एड्रेसेस. So C++ is also provide the features of pointers. So we can directly interact with the memory addresses. Okay, हम directly memory address के साथ interact करेंगे. Okay, for example एक घर है, घर के अंदर कुछ लोग रहते हैं. Okay, so value is the घर, value is the, जो घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो values है, और उनका जो एड्रेस है वो घर है, एड्रेस। तो हम वो उस घर में मतलब ये ए बी से नाम का आदमी उस घर कहाँ पे रहता है, ये सर्च नहीं कर रहे हम क्या सर्च कर रहे हैं? उसका एड्रेस सर्च कर रहे हैं। हाँ, वो घर में कौन से घर में एबीसी है। जस्ट वी आर डायरेक्टली फाइंडिंग द एड्रेस। ओके, उस एड्रेस पे ये पर्सन बंदा मिलने वाला है, मतलब मिलने वाला है। ओके, जस्ट वी आर डीलिंग विद द एड्रेसेस, डायरेक्टली उस एड्रेस से हमको वैल्यू मिल जाएंगी। वो वैल्यू कहाँ पे, वो नहीं सर्च करे, दैट इज पॉइंटर कॉन्सेप्ट। ओके, सी प्लस प्लस प्रोवाइड फीचर्स ऑफ पॉइंटर, वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी एड्रेसेस, क्योंकि हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी एलोकेट होती है। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ द मेमोरी एड्रेसेस by using the pointers. Okay, how you can interact? By using the pointers.
दिस इज व्हाट important point comes. So we can use the pointer. तो हमने देखा है ना पॉइंटर टू स्ट्रक्चर. ओके वी कैन यूज मेमोरी फॉर स्ट्रक्चर फंक्शंस सारे एक्सेट्रा. ओके हम पॉइंटर से फंक्शंस को कॉल करते हैं, पॉइंटर से स्ट्रक्चर को कॉल करते हैं, है ना. एरे को भी कॉल किए हमने, स्ट्रक्चर हम देखे सी में. पॉइंटर पॉइंटर को एरे है ना, एरे पॉइंटर्स वही भी एक दिख चुके हैं हम. स्ट्रक्चर को भी कॉल किया पॉइंटर से. सो वी कैन यूज पॉइंटर्स फॉर memory. Okay, so memory matlab अब structure is also hold the memories, array is also hold the memories. Okay, function is also hold the memory. So we can use the pointers for memory, comma, structure, comma, functions, comma, array and etc. So by calling the pointers are recommended. Yes, yes, हाँ, yes, yes, जैसे हम add is the name of function or simply we know the structure I think. Okay, so the structure, हम स्ट्रक्चर लिखा है स्टूडेंट का और उसमें कुछ डेटा नंबर लिखे, रोल नंबर, नेम हमने डेटा नंबर लिखे. तो हम क्या करते हैं, ये हमने एक लिखा है यस1. ओके सो हम कैसे एक्सेस करते हैं, यस1 डॉट आर्यन इज इक्वल टू समथिंग. ओके यस1 डॉट नेम. ओके वो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि STR CPY करना पड़ता है. ठीक है रहने दीजिए, हम इतना ही देखते हैं कि यस1 डॉट रोल नंबर इज देयर. ओके सो दिस इज द वन वे टू एक्सेस द मेमोरी एड्रेस, टू एक्सेस द वैल्यू. सो ये जो है इसका मेमोरी है, आर्यन इज द मेमोरी. और ये S1 के लिए. ओके आल्सो द S2 हैविंग द सम अदर मेमोरी बट वैल्यू मे बी द डिफरेंट. देन हाउ वी कैन एक्सेस दिस वन. ओके सो S2 dot RN is equal to 100. Okay roll number is other for those student having the two different roll number. So this is the one way to access the memory, to access the data members of structure using what, dot operator. Okay using what, dot operator. So instead of dot operator we are going to use here what, pointer variable. Okay we use here pointer variable or not to access the structure variables. Okay data members, how can access this pointer variable. Okay how can access, yes1 this one. Okay that yes1 this pointer. Okay and you can access here like this way, you can write like this way or you can access this one, no problem. आप ऐसे access भी कर सकते हो. Okay that is the same thing. Instead of dot operator you are using here what, pointer variable. Okay so we must have to create here what, pointer structure here, sorry pointer you need to create. So we need to write here what, pointer variable, structure pointer variable asterisk yes1. ओके अगर ये आपको ऐसा एक्सेस करना है तो आपको इसको पॉइंटर लगाना पड़ेगा, है क्या नहीं, स्ट्रक्चर्स. सो एस्ट्रिक यस1 मीन्स अ पॉइंटर और यस दैट इज अ पॉइंटर वेरिएबल यू नीड टू क्रिएट फॉर द स्ट्रक्चर. इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर टू पॉइंटर एंड वी आर गोइंग टू एक्सेस दिस वन. पॉइंटर बन गया. इट्स अ एक्सेसिंग वेरिएबल. ये कब एक्टिवेट होता है, जब आप उसको पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे कहीं पे तो भी. एस्ट्रिक का मतलब होता है कि पॉइंटर वेरिएबल. हाउ टू डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल, बाय यूजिंग द एस्ट्रिक. जब भी कोई भी वेरिएबल को आप एस्ट्रिक लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल. और ये पॉइंटर क्या है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है. जब हम ऐसे लिखते हैं इंटीजर दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू इंटीजर. इट्स पॉइंटर टू INT. बट यस इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल सो यू कैन से हियर व्हाट, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल. वी कैन से व्हाट, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है ना. अब जब आप ऐसा लिखोगे और उसके जो डेटा मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स कौन से, रोल नंबर है, नेम है, कुछ भी है, वो डेटा मेंबर्स आपको एक्सेस करने हैं स्ट्रक्चर के. सो वी यूज योर पॉइंटर वेरिएबल. ये देखो एक्सेसिंग, ये पॉइंटर से हम एक्सेस करते हैं, ये हमने स्ट्रक्चर में देख चुके हैं. ओके क्यों ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का डेटा स्ट्रक्चर ये अलग अलग होता है, इसके कारण हम ये ऐसा वेरिएबल यूज़ करते हैं. लेकिन एरे में ऐसा नहीं लिखते हैं. ओके हम डायरेक्टली एस्ट्रिक P और उससे हम ले लेते हैं, डायरेक्टली हम एक्सेस कर लेते हैं. ओके एड्रेस एंड दिस से, और फंक्शन से भी हम डायरेक्ट कर लेते हैं.
ओके, दिस पॉइंटर वेरिएबल टू वे से हम स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट है डॉट ऑपरेटर्स ऐसा, या फिर ऐसा पॉइंटर वेरिएबल। सो दिस पॉइंटर्स आर डील विद द मेमोरी एड्रेसेस, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एरे, मतलब एरे एलिमेंट भी है। ओके, एरे एलिमेंट जो है हम जब तक अभी आप एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे पॉइंटर्स को, तब तक वो एरे एलिमेंट हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मतलब एरे एलिमेंट आप एक्सेस कर सकते हो नॉर्मली, नॉर्मली एक्सेस कर सकते हो। ओके, नॉर्मली कैसे एक्सेस करेंगे, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। ओके, फॉर लूप लेंगे हम, आई वांट टू एक्सेस द ऑल दिस एरे एलिमेंट, फॉर लूप ले लेंगे हम, आई इज इक्वल टू समथिंग, सो लिख लेंगे। उसमें हम लिखेंगे प्रिंट है, प्रिंट में क्या लिखेंगे हम, ए ऑफ आई लिखेंगे, सो एलिमेंट बाय एलिमेंट विल बी प्रिंटेड और नॉट। ओके, द सेम थिंग आई वांट टू एक्सेस बाय यूजिंग द pointer. Okay, then create here asterisk p. Okay, and this concept you have seen in the C programming, in the pointer. Okay, so we'll create one variable. Okay, then by using this pointer variable, okay, so it is going to be print asterisk p. Okay, so asterisk p, so it means the 10 will be printed here 4 times, so we need to increment what, pointer variable, then we are going to write here as p plus plus. Okay, so now the pointer variable is going to be increment. Okay, so उस एड्रेस पे जाएगा, उसके बाद ये एड्रेस पे जाएगा, ये एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर हमने एस्ट्रिक हटा दिया तो क्या प्रिंट होगा, ओनली एड्रेस प्रिंट होंगे हर एलिमेंट के। ओके, सो बाय यूजिंग द पॉइंटर वी कैन आल्सो एक्सेस द array elements. Okay, we can also use the functions. Okay, functions भी हम एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर्स से। सो दैट इज व्हाट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिकर्शन, extensible and object oriented. Recursion we know what is that. Recursion, recursion means function calling itself. Extensible means we can add new features. Object oriented means it that follows the properties of oops. So I am going to write fast here. Okay, so in C++ we can call the function. What is the use of function? That is code reusability. We can create a one function, you can call many more times. Okay, so we can call the function within the function, that is known as what, recursion. दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक प्री डिफाइंड होते हैं, दूसरा यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मीन डेवलपर डिफाइंस, इट्स प्रोवाइड कोड रियूजेबिलिटी। It's provide code reusability for every function, for every functions. Okay, recursion means this process of calling the function within the function. Okay, call itself, that is known as recursions. Functions का use क्या है, once you declare the function, once you define a function, so we can call it as many more times. Okay, so add is the name of function, integer a comma int b. Okay, just we have, it's a user defined, it's not a predefined, and it's returning a plus b. Okay, so now we can call this function by passing the arguments. Okay, we can call this function, so it will return the what, 30. Again we are going to pass the different arguments. Okay, something different arguments, again it will giving the result something. Okay, so the function we have written once at a time, and we are calling at a many more time, that is what, code reusability. Okay, that is a code reusability. हर प्रोजेक्ट में फंक्शंस की ज़रूरत गिरती है, और 10 डेवलपर रहते हैं, और एक कोड लिखना है उनको ओटीपी जनरेशन का। ओके, ओटीपी जनरेशन का एक कोड लिखना है कि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में 10 लोग काम कर रहे हैं, देयर इज़ अ वन प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएम इज़ देयर, प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, so there is a one problem in the project, they have the one concept, so OTP generation, OTP जनरेशन का कोड लिखना है। ठीक है, सो अगर वो OTP जनरेशन का कोड सबके लिए काम में आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो एक ही है। ओके, प्रोजेक्ट एक ही है, प्रोजेक्ट एक है, और प्रोजेक्ट पे एम्प्लॉय काम करने वाले 10 पीपल्स आर देयर। ओके, 10 कोडर्स और डेवलपर्स आर देयर, 10 डेवलपर है।
तो हर एक डेवलपर को तो जरूरत करेंगे, वो एक दूसरा मॉड्यूल तैयार करेंगे, वो दूसरा करेंगे, लेकिन सबको, सभी डेवलपर को एक कॉमन चीज़ रहेंगी जो है ओटीपी का कोड। ओके, सो द पहला डेवलपर ओटीपी का कोड लिखेगा। ओके, इसको 30 मिनट जाएंगे। दूसरा डेवलपर को भी, वो भी, उसको भी ओटीपी का कोड है, वो भी लिखेगा, उसको भी 30 मिनट जाएंगे। ओके, ऐसे करते करते जितने भी 10 लोग हैं, ओके, उसको हर एक को ओटीपी का कोड लिखने के लिए 30 मिनट जा रहे हैं। तो 10 into 30, हाउ मेनी टोटल? 30 मिनट्स आर गॉन। ओके, 30 मिनट्स जा रहे हैं एक ओटीपी जनरेशन का कोड लिखने के लिए। कितने? 300 मिनट, सॉरी 300 मिनट्स मतलब 5 आवर्स, बराबर है, 5 आवर्स। सो 5 आवर्स जा रहे हैं, है ना, एक ओटीपी का जनरेशन कोड लिखने के लिए 10 लोगों को 5 आवर्स जा रहे हैं। और वही वो आप अपने हिसाब से कोड लिख रहे हैं, 10 लोग, 10 लोगों को वो काम है वही चीज़ का। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ दिस वन, व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, पीएम है, वो जो है प्रोजेक्ट मैनेजर, ही इज गोइंग टू राइट अ कोड फॉर द ओटीपी विद इन द 30 मिनट्स। ओके, within the 30 minutes he is going to write this code. Okay, just wait for 1 minute. Okay, so project manager is going to be write a code for OTP generation, okay, in 30 minutes, and it is make it as a functions. Okay, so ये function तैयार करेगा। ओके, सो द उसमें से इतना टाइम हमारा बच गया है। सो ये क्या करेंगे, ये जो फंक्शन उसने डिज़ाइन किया है ओटीपी जनरेशन का, ओटीपी फंक्शन, ओके, इन दैट प्रोजेक्ट दैट इज एक्सेसिबल इन एनीवेयर। ओके, उस प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल है, सो हाउ कैन कॉल, वी कैन कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम एनीवेयर। उसी प्रोजेक्ट में हम, आप एक बार ही आप कोड लिखे बना के रख दीजिए कि ओटीपी जनरेशन का ये कोड है, और इस फंक्शन को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हो। सो वन डेवलपर इज ऑल्सो यूज दिस फंक्शन, अनदर डेवलपर इज ऑल्सो यूज दिस फंक्शन। ओके, जितने भी डेवलपर है उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, वो ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट इज अ कोड रीयूजेबिलिटी, दिस इज द यूज ऑफ फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सटेंसिबल। C++ is extensible. So Java is designed by using a C++. Okay, C++ easily adopt the new technology, new concept, new features. Okay, that is why C++ is what extensible you can say. C++ in the C++ language is extensible because it can easily adopt new features. Okay, like a C, you know, C is also extensible, C++ is designed. C++ is extensible, many other programming languages are designed. For example, Java, then database softwares. Okay. Next one is object oriented, you know very well. C++ is object oriented, additional features. Okay. It follows the properties of OOPS. Object oriented programming is there. C++ is a object oriented programming language. So OP makes development and maintenance is very easy. Why we are going for the object oriented? It's have some additional features, and development is going to be fast and easiest way. Development and maintenance easier, where whereas in POP, okay, प्रोसीजर में नहीं है,
procedure, whereas in the procedure oriented programming language. Okay, OOP makes the development and maintenance easier and fast also, whereas in the procedure oriented programming language, so POP से ज़्यादा OOP का development fast है. Okay, that is going to be easy. Also, it is POP में it's not easy. Okay, it is not easy to manage. Okay, जैसे 1000 लाइन का कोड है, because of size that is matter. Okay, so to manage it is not easy to manage if code grows as a project size grows. Okay, it's unable to manage properly in the POP, so that's why we can go for the object oriented programming language. Okay, because there is a objects. Okay, so that objects hold a lot of data. Okay, बहुत सारा data objects hold करता है, that's why we can maintain properly it. Okay, we cannot maintain proper the procedure oriented because there are not objects. Okay, so बड़े बड़े projects हम C में नहीं बना सकते, इसलिए we are going for C++. Now it's a compiler base. Last one is features. Okay, compiler base. So then after that we are going to start introduction to the C++. Okay, means actual programming concept of C++ we are going to start in the next class. Okay, so the here what is a compiler? So C++ is a compiler based programming language. तो जब भी हम प्रोग्राम रन करने के लिए जाते हैं तो भी वो सबसे पहले कंपाइल्ड ही होता है. ओके, कंपाइलेशन मीन्स फाइंडिंग द एरर्स और कन्वर्टिंग द हाई लेवल कोड इनटू द लो लेवल कोड if there is no error. Okay, so it means without compilation you cannot execute. Okay, it means without compilation, it means without compilation no C++ program can be executed. Okay, अगर आप एग्जीक्यूट करने के लिए भी जा रहे होंगे तो सबसे पहले कंपाइल ही होता है. ओके, अगर आप में एरर नहीं है तो भी आप रन कर रहे हो तो भी पहले कंपाइल होके आपको आउटपुट देता है. इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओके. So first we need to compile the program. First we need to compile our program using compiler. And then we can execute our program. Okay, then we can execute our program like a C same as a C. अगर आप रन करने के लिए भी डायरेक्ट जा रहे हैं तो भी सबसे पहले कंपाइल ही होगा. ओके, एरर होगा तो एरर दिखाएंगे, अगर नहीं होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, so these are the features of C++. Now we are entering our subject, that is a C++. The next class we are going to start